Hello everyone, welcome back. In this lecture, basically, we are going to deal with the web service and we are going to learn a very deep about the web service. Initial lecture will be the theoretical lecture of the web service and we are going to basically learn the theory part and हम लोग देखने वाले हैं basically कि वेब सर्विस कैसे इन प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो हम डील करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा वेब सर्विस का यूज क्या है एंड धीरे धीरे हम लोग फिर विल लर्न द अबाउट द व्हाट इज सोप वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेब सर्विस एंड वी आर गोइंग टू सी real time real example of the web service in detail, so don't need to worry about it. Let's basically in this lecture basically let's just understand why the web service is important and what are the real uses of the web service. Okay, let's if you're talking about the definition of the web service is a standardized medium to propagate communication between the client and servers application on the worldwide internet. If you want to communicate two application, let's say if you want to communicate a server with a client and a client with a server, then you can communicate only using the web service. Okay, so if the clients wants to communicate with the server, then it is possible only using the web service and through the over the internet. Okay, let me try to make some diagram and explain you. Let me open the paint basically. Let me some draft for something for you. Okay, let me I have a okay now maybe some text. Okay, let's consider this as a client. Okay, or you can say like that. Provider, or you can or another server, or you consider sorry, it is service not service provider, it's service consumer. We similarly is a server who is a service provider, which is basically a service provider. Okay, now let me make an arrow. Let's make an arrow. Now let me text here. Now this is a simple diagram of the web service. Now let's take a scenario. There is a client basically who wants to communicate with the server machine. Okay, and the client क्या करेगा, client basically will request some information from the server and they will provide a response back. This is basically a called web service. Okay, the web service basically क्या होता है, real time basically you can create a non real time web service also. I will see हम दिखाएंगे कैसे हम लोग create कर सकते हैं. But basically a web service basically in real scenario basically real time होता है. Real time is कि as soon as you request कोई send करता है client, तुरंत उसको response back मिलेगा, फिर उसको बोलते हैं बेसिकली वेब सर्विस. अगर एसिंक्रोनस करते हो, we can also create a asynchronous web service and I will see you show you basically how we can create. Okay, तो अगर asynchronous web service create करते हो वो रियल नॉन रियल टाइम होता है, but web service means most of the web service are real time and real time means as soon as client basically कुछ information को basically क्या करता है, send करता है, request करता है, then server will provide response back.
क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, सर्विस कंज्यूमर होता है एंड द सर्वर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्यों कि क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट कुछ इंफॉर्मेशन को उसको चाहिए, क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन को क्या किया, वो रिक्वेस्ट कर रहा है फ्रॉम द सर्वर। सर्वर क्या है, वो सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है। तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं, वो सर्विस, सर्वर जो होता है सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसे बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो उधर से कुछ जो यहाँ भी इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया तो इधर से वो रिस्पॉन्स देगा। ओके, इन केस रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कुछ एरर वापस आता है, 404 समथिंग लाइक दैट एरर विल क्लाइंट विल गेट इन केस service provider is not available, and many there are many type of error basically, and different scenario it will get as per the error handling. Okay, now this is a basic example of the basically a web service. Okay, now how they can communicate each other. तो मीडियम अगर कोई बात करे कि मीडियम क्या होगा, तो मीडियम विल बी द इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट, और यू कैन से दैट इंटरनेट को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट HTTP. ओके, तो दे कैन कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट और यू कैन से दैट HTTP. ओके, नाउ फॉर्मेट क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का, लाइक दैट की मतलब कि अगर बात करें क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है सर्वर से, एंड सर्वर कम्युनिकेट, सर्वर विल रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट रिस्पॉन्स. ओके, तो इसका एक्चुअल मीडियम क्या होगा. ओके, मतलब लाइक दैट की मतलब फॉर्मेट क्या हो सकता है. जैसे अगर हमको बात करना है लाइक दैट कि हम अगर बात करना चाहते हैं कोई साउथ इंडियन, तो मेरा मेरा मीडियम जो होगा इंग्लिश होगा. ओके, क्योंकि हमको जो है एक्चुअल में क्या होता है, हमको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आता है. okay? दूसरा बात करते हैं, अगर हमको बात करना है लाइक दैट हमको कोई फ्रेंच पीपल्स है. ओके, तो माई मीडियम विल बी इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच. ओके, तो दिस इज बेसिकली ए मीडियम, मतलब दिस इज बेसिकली ए फॉर्मेट विच इन विच फॉर्मेट बेसिकली आई वांट टू कम्युनिकेट. ओके, similarly if client want to communicate with the, if the client want to communicate with the, let me use that first, if client want to communicate with the server, then there should be also a format required to communicate, and that should be a standard format. तो format क्या होता है, either it will be XML, client basically requests the some information from the server in the form of XML, or it is a JSON. XML and JSON are the different message format basically. I will learn, we will learn basically XML you already know, in JSON we say about JSON, we will learn in detail about the in upcoming lectures. Okay, तो बात करते हैं, तो इसके लिए XML या JSON मैसेज फॉर्मेट में बेसिकली क्या कुछ इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, एंड इट विल रिस्पॉन्स बैक इन द सेम मैसेज फॉर्मेट टू द क्लाइंट. ओके, if it is requesting in form of XML, then it will reply back to in the form of XML. If it is requesting form of JSON, then it will replying back in the form of JSON. Okay, and this is happening over the internet only. This is happening over the internet only. Okay, so this is basically a simple concept of the client and the basically web service. How web service work? The web service basically, web service, any client is basically a service consumer who can request some information from the server, and server will provide some response to the client. Now this is a concept of the web service. Okay, now web service are mainly of the two types. If you go in the further classification of the web service, mainly it is of two types. One is the SOAP based web service, and other is basically a REST web based web service. Okay, now what is the difference between them? If you coming over the full form on the SOAP, then let me give you just basically it is basic question. You may know, or let me tell you basically. So basically known as a simple object access protocol. Simple object access protocol, and uh, if you are using the SOAP, the format basically the client use to communicate with the server is the XML. In this case, basically it uses the XML format of message to fetch some information from the server. Okay, but if you are using the REST, basically in case of REST, basically the full form is the representational state transfer. Okay, and
it basically uses the XML, JSON, and or you can also use the TXT message, text message to fetch some information from the server. But if you are someone is saying the which basically language most of them used by the REST, it is the JSON. Reason behind this is basically XML basic SOAP based web service is used in case of if the payload is basically large. If the client is wants to fetch high information, if client wants to fetch more information at a time, then basically the payload is high, then we use the XML basically. If the payload is lightweighted, let's take a small information wants to fetch by the client from the server, then in this case basically we use the JSON language. JSON is basically a lightweighted basically message protocol. Okay, this is a lightweight. Okay, so in case of basically REST, basically we prefer JSON. In case of SOAP, basically we use XML. Not prefer, it is use XML only. Okay, so this is basically mainly two type of uh, uh, web service basically we follow. Okay, we are going to learn basically both service in detail, so you don't need to worry about that. Okay, now coming to the uh, which one is the most used currently, most getting used currently, the most of the application and now we getting create using the REST is in the is on the high demand. Okay, currently the SOAP uh, are being used less amount in comparison to REST. Okay, so REST is currently in high demand. Okay, now coming to the no, okay, this is all about the basic of the web service. Okay, now coming to few real life example of the web service. Okay, I want to make a test diagram. How can I do that? Okay, let me open the new page. The paint, sorry, no, it's first page I have been opened. Okay, let me use the uh, okay, let's take a scenario. I will use few here and few here. Let me, okay, some real time example I want to give you the web service. Okay, let's take a scenario. uh, यू में आप मेनली आप लोग यूज किए होंगे कोई भी पोर्टल लाइक दैट, मे बी लाइक दैट कि अमेजन का वेब, अमेजन और फ्लिपकार्ट और मेक माई ट्रिप और गो आई बी गो, वॉट एवर द बेसिकली you are the basically using the applications on the mobile phone. These all are using basically a web service. Even the whatever the payment platform like that, the PayPal and what are the payment you are making, these all are using a web service. You you may not be aware, but you are surrounded by the web service in every aspect. Even whatever the site currently you are using, maybe that will be that is using a basically web service. Okay, let me show you some example. Let's take a scenario of the let's take a scenario. There is a platform whose name is the text. There is a platform whose name is go whatever, what maybe or let us make metric. Any booking platform, I'm just taking example. Okay, or any YB whatever is, you can take any booking platform who used to book the basically any like that hotel or platform or anything like that. Okay, let me take few more like that. Consider this is the basically some flights, or this is some, let's take some hotel. Let's take some hotel. Let me, this is the flight.
like that Indigo, and this is the airline Air India, and let's take another airway is the anything you can take example. Let's take another airline. I'm not getting like that. X name. Let's make keep a name any. Okay. And hotel. There is some hotel. Hotel 1, hotel 2, hotel 2, and there is hotel 3. Okay. Now let's take a scenario. Let's take a scenario. I am the user. Okay. I once I am planning for a trip. I am user basically. I am planning for a trip to Goa. Okay. For that basically I need to book a aeroplane to go to Goa, and let me basically I am the user. I want to plan to go to Goa, and under Goa basically I want to book a hotel to live. Okay. Now in this scenario basically I am using the Make My Trip basically is a website which basically facilitates this offer to book a basically either you can use from a flight or you can use a hotel from that website, where you will find basically the rate which flight basically is the basically what is the timing of the flight and what is the flight name basically and what is the price for that. Okay. Similarly you will get the hotel name and what is the hotel location and what is the price for that hotel and what is the basically rating. That's all everything you will see the about the hotel. I will lots of the list will be there present in the once you search on that website. Okay. Now the thing is that what are the Make My Trip are the Make My Trip basically asking every flight company to give the list and they are updating website? Are the Make My Trip asking every hotel to give their information and update into their portal? Absolutely not. बिल्कुल नहीं. ओके. होता क्या है? होता ये है, इंडिगो कंपनी ने क्या किया, अपना एक वेब सर्विस क्रिएट किया है जो कि मेक माई ट्रिप को दे दिया है. एयरलाइन कंपनी ने अपना एक वेब सर्विस क्रिएट किया है, मेक माई ट्रिप को दे दिया है. और एयरलाइन कोई एक्स है, दूसरा एयरलाइन है, वो अपना वेब सर्विस क्रिएट किया है और दे दिया है मेक माई ट्रिप को. Similarly, Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3, these all have created their web service and given to Make My Trip. ओके. और ये जो अपना वेब सर्विस में जो अभी विजिट क्रिएट किया है उस वेब सर्विस में दे आर अपडेटिंग देयर फ्लाइट डिटेल्स इन एवरी सेकेंड्स. एज सुन एज आई सर्च, जैसे हम सर्च किए बेसिकली क्या वो फ्लाइट डिटेल्स इन द गूगल क्रोम, वैसे ही क्या हुआ, जैसे हमने सर्च किया वैसे बेसिकली एक यहां से बेसिकली एक यहां से मेक माई ट्रिप बेसिकली रिक्वेस्ट किया यहां से इंडिगो से इंफॉर्मेशन. मेक माई ट्रिप बेसिकली रिक्वेस्ट किया इंडिगो से कि आई नीड द इंफॉर्मेशन. मेक माई ट्रिप रिक्वेस्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिगो and let me use a better pencil. Okay. Make My Trip basically requested basically information from Indigo. Indigo provide किया कि
ये मेरा रिस्पॉन्स है और ये मेरा प्राइस के डिटेल्स है और मेरा जो है ये टाइमिंग डिटेल्स है। सिमिलरली मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट किया एयरलाइंस को, मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट किया जिसको, सबको मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट किया और दे विल गेट ए रिस्पॉन्स बैक इन विद द प्राइस डिटेल्स एंड द टाइमिंग डिटेल्स। ओके, अब फर्दर वो अपना वेबसाइट में ये शो कर दिया कि दिस इज द प्राइस डिटेल, दिस इज, एंड वहां से हम देख लिए और बुक कर ली। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखा जाए तो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, हु इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग, मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेक माई ट्रिप बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर क्लाइंट हो गया। ओके, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंडिगो है, तो सर्विस प्रोवाइडर ये हो गया तुम्हारा सर्वर, और यू कंसिडर, और यू कंसिडर इधर सर्विस प्रोवाइडर। सिमिलरली होटल जो है, पहला होटल से ये क्या किया, मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट किया इन्फॉर्मेशन को, और होटल ने रिस्पॉन्स बैक दे दिया कि मेरा ये लोकेशन है और ये मेरा प्राइस है और करंटली ये सीट अवेलेबल है इतना होटल में मेरा। ओके, सिमिलरली मेक माई ट्रिप रिक्वेस्ट किया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होटल 2, सिमिलरली फ्रॉम द होटल 3, एंड दे विल गेट बैक रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज होटल्स। ओके, और उस हिसाब से वो अपना पोर्टल में अपडेट कर दिया रियल टाइम। सिमिलरली दिस कैन भी हो सकता है कि वो मेक माई ट्रिप, मेनली दिस इज हैपनिंग रियल टाइम, ये रियल टाइम होते रहता है, बट मे बी द केस हो सकता है कि वो रियल टाइम ना होके हर 1 मिनट में चाहे 2 मिनट में ऐसा सेट किया हो कि दे विल बेसिकली रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस होटल एंड दे विल get back from the information from that hotel and it update in the website basically. Okay, ठीक है, दिस इज बेसिकली वन एग्जांपल कि वह कैसे जो है मेक माई ट्रिप, मे बी द केस हो सकते हैं हर 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 होटल के पास अपना वेब सर्विस होगा नहीं। एक एक क्वेश्चन दिमाग में तुम लोग आ सकता हो, है ना, आप लोग का, कि हर होटल का तो अपना वेब सर्विस तो होगा नहीं, तो हाउ इट इज पॉसिबल। हियर द केस आता है, हियर जो आता है एक जो होता है ब्रोकर, इंटरमीडिएट ब्रोकर, कोई एक तीसरा थर्ड पार्टी जो है आएगा, बोलेगा भाई कि हम तुम्हारा जो है वेब सर्विस को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तुम जो है अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और हम डायरेक्टली मेक माई ट्रिप जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन को फेच कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम होटल हो, तुम नॉन टेक्निकल व्यक्ति हो, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज है नहीं, तो तुमको हम हेल्प करेंगे बेसिकली टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिश इनटू द मेक माई ट्रिप एंड गो आई बी गो व्हाटएवर द। इस केस में आता है मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या करता है, मिडिल मैन बेसिकली हेल्प दीज होटल्स और दीज फ्लाइट कंपनी टू फॉर द क्रिएटिंग देयर वेब सर्विस एंड अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन द वेब सर्विस। ये बेसिकली करता है, ये बेसिकली टेक्स्ट, ये इन लोग से इन्फॉर्मेशन लेके अपना वेब सर्विस से यहाँ पर रेडी रखता है, एज सुन एज दे फेच इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली यहाँ से इसको दे देता है और ये रिस्पॉन्स बैक बेसिकली यहाँ से मिल जाता है। ये रिक्वेस्ट करता है यहाँ से इन्फॉर्मेशन और ये रिस्पॉन्स बैक के लोग देता है कि ये मेरा प्राइस है और ये मेरा डिटेल्स है। ये these all thing whatever happening, these all are happening over the internet, or you can say that HTTP or HTTPS whatever they think, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रियल एग्जांपल ऑफ द वेब सर्विस। ओके, ये वेब सर्विस बेसिकली कैसे काम करता है, तो वेब सर्विस बेसिकली क्या हुआ, एक होता है कंज्यूमर हो गया, एक हो गया प्रोवाइडर हो गया, बेसिकली इससे बेसिकली रियल टाइम एग्जांपल ऑफ द वेब सर्विस। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। I don't think any doubt you have. If you still have doubt, you can comment me. Now, let's take one more example of the web service. I want to take one more example. Let's take example. Let's take example. When you are doing a payment, online payment, basically, when you are buying a, like let's say, I mean, when you are, let's take example. I want to buy, currently the sale is going upcoming in the Amazon, Flipkart, whatever be. I am not permitting anyone. I don't know. In basically Durga Puja is now is going to come and sale is going to be basically coming. Okay, so once the sale basically come, basically I want to buy a mobile phone. Let's take scenario. Okay, तो हम जैसे मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम मोबाइल फोन बेसिकली अमेजन में डालेंगे कि लाइक दैट की सैमसंग मोबाइल फोन अंडर 20,000 व्हाटएवर दे,
I will fetch information, and it will list all the mobile phones in the different basically shopkeepers. Basically this shop, from this shopkeeper basically you will this mobile phone, this mobile phone, this mobile phone, this one, basically from different place. Basically it will list. Okay, this is basically the seller, and this is the price of the basically of that mobile phone. Okay, now how basically Amazon is getting that? Same thing happening there also. All the shopkeepers basically using the web service. But again, the shopkeeper is a non-technical man. Then how they can do that? There is a middleman basically came here picture. They help all the shopkeepers basically to updating their information. Basically they all help all the shopkeepers basically. यहाँ पर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को बेसिकली ये लोग ये यहाँ पर वेब सर्विस, ये जो मिडिल मैन है वेब सर्विस क्रिएट करता है. ओके, और यहाँ पर सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो उसका रिटर्न रहता है. यू कैन से दैट. और ये मेक माई ट्रिप को जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अमेजन को चाहे फ्लिपकार्ट को जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे विल बेसिकली रिक्वेस्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हियर. अगेन दे विल गेट ए रिस्पॉन्स बैक. उस हिसाब से बेसिकली ये अपना जो है अपडेट कर देगा बेसिकली अपना पोर्टल में. और फ्रॉम देयर आई विल बाई द फोन. वंस हम सामान खरीद लिए, उसका से क्या होता है, पेमेंट प्रोसेस होता है. हम लोग को पेमेंट करना होता है. तो पेमेंट का कुछ, अब देखो बहुत सारा माध्यम होता है पेमेंट करने के, लाइक दैट पेपाल होता है और बहुत सारा प्लेटफॉर्म है पेमेंट का. तो अगेन देयर आल्सो कम्स इनटू पिक्चर. आपको याद होगा कि अगर आप पेमेंट जब करते हैं तो पेमेंट में आप कार्ड नंबर डालते हैं. कार्ड नंबर जो भी वॉट एवर डिजिट आप पेमेंट में कार्ड नंबर डालते रहते हैं. ठीक है, कार्ड नंबर जैसे ही डालते हैं, लेट्स एग्जांपल कि हमने कार्ड नंबर गलत डाल दिया, तो कार्ड नंबर यहाँ पर नीचे अलर्ट आ जाता है कि ये कार्ड नंबर सही नहीं है. ओके, आपने फिर कार्ड नंबर सही डाला तो वो दिखाता है कि हाँ ये वीजा कार्ड है और ये कार्ड सही है, और फर्दर प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए. दैट्स आल्सो कमिंग टू पिक्चर ऑफ वेब सर्विस. बेसिकली क्या होता है, जैसे एज सुन एज आई पुट द, हमने जैसे जैसे हमने कार्ड नंबर डाला, वो जाता है वो वो जाता है इन्फॉर्मेशन. हमने रिक्वेस्ट किया इन्फॉर्मेशन कहाँ, थर्ड पार्टी के बेसिकली पेपाल को हमने इन्फॉर्मेशन फेच किया. पेपाल बेसिकली क्या करता है, दैट वैलिडेट करता है, वैलिडेट करके रिस्पॉन्स बैक देता है कि हाँ इट्स ओके है, ये भेजा कार्ड है, यू कैन प्रोसीड. ओके, तो हर स्टेप में जो है तुमको आपको जो मिलेगा बेसिकली कि आपको जो है वेब सर्विस यूज करने को मिलेगा. आप वेब सर्विस से मान लीजिए कि घिरे हुए हैं. ओके, सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं एक और, इस बचा नहीं है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ये साइड में. लेट्स एग्जांपल कि आप जो है गूगल मैप यूज करते होंगे. ओके, गूगल मैप, डू यू नो गूगल मैप आल्सो यूजेस द वेब सर्विस. गूगल मैप बेसिकली क्या करता है, जैसे हम एज सुन एज हम मानते हैं कोई फेच करते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमको लाइक दैट कि मान लो कि हमको दिल्ली से जाना है हमको बैंगलोर. तो आई एम गोइंग रॉन्ग वे, लेकिन दिल्ली से हमको जाना है, दिल्ली को मान लो कोई प्लेस एक्स है, वहां से हमको प्लेस वाइज दिल्ली में ही जाना है. ओके, उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं गूगल मैप में. ओके, उसके क्या होता है, गूगल मैप बेसिकली क्या होता है, दिखाता है कि तुमको दिखाता है कि उसके बगल में जो है अगर तुम देखोगे तो गूगल मैप दिखाता है कि उसके बगल में प्लेसेस दिखाता है, प्लेस का रूट दिखाता है. दिस ऑल थिंग बेसिकली जो है गूगल मैप यूजेस द वेब सर्विस टू शो यू. ओके, वेब सर्विस की मदद से बेसिकली गूगल मैप क्या करता है, फीच द इंफॉर्मेशन एंड शो यू. ओके, वो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स में आपको फिर वो दिखा देता है. ओके, तो इस तरह से जो है आप वेब सर्विस से मान लीजिए कि तुरंत से जुड़े हुए हैं. ओके, तो सिंपल अगर भाषा में सब फिर से रिपीट करें डेफिनेशन, तो वेब सर्विस इज ए बेसिकली ए क्या बोल सकते हैं, मैसेजिंग. वेब सर्विस एक मीडियम है टू कम्युनिकेट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर बेसिकली थ्रू द ओवर द इंटरनेट. If you want to communicate over the internet through the different messaging protocol, then here the web service came into picture. Through web service we can communicate between the client and the server. Client can some request information from the server basically, and server can response back to the client as per the information what are the basically present. Okay,
There are different of message web service like the SOAP web service, REST web service. SOAP web service basically uses the XML message protocol. REST basically most of the REST are JSON. Okay, lots of example. I have shown like that the make my trip basically how the make my trip basically uses the web service basically to fetch information from the hotels or airlines basically. Okay, how Amazon basically use the web service basically to show you basically the article details of the on their website and how the payment can be processed done with it. How the Google Map basically uses the basically Google Map basically uses the to to show you the mapping details or the place details on the Google Map. These all are uh, uh, the example of the web service. Lots of example you can see from the web service. This is basically a very common thing. Okay, so hope this is basically introductory lecture of the web service and hope it is clear to you. And from next lecture basically we are going to learn more deep about the basically a web service. Initially I'm going to further with the SOAP basically. After that I'm going to the REST. Okay, so hope you have a interesting time. If you have any doubt you can comment me or you can send me a mail with the learn@passofficial.com. You can also follow me over the Instagram or Facebook page and whatever you can comment me also mail. I'm okay to reply. You can basically if you want to any question you can also send me over the Telegram. Okay, we'll meet again with the next interesting topic. And अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन। थैंक यू ऑल।